ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਵੀਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਈਵੇ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਮ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? बहुत फर्क है बच्चों। फर्क ये है कि उस वाले त्योहार दी भावना नाल मनाए जाते सी। ठीक है, लोग उस वाले समझते सी कि लोकां नू क्रेज हुंदा सी, आई दिवाली आनी दिवाली आनी दिवाली आनी दिवाली आनी। लोग गांदे सी आई दिवाली लड्डू बड़ी बर्फी वाली गांदे सी। और उस वाले लोग जेड़े सी ना एक हफ्ता पहलों ही घर दे विच रौनक शुरू हो जाती, बेदियां शुरू हो जांदियां, सारे काम हो जाते। पर उस वाले दा माहौल ते हुण दा माहौल, क्योंकि समा बदल गया, समय दे बदलण नाल ठीक है लोकां दी भावना भी बदल गई। अंश समझ आई मेरी गल? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, साडा दूजा क्वेश्चन भी है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? देखो बच्चे, हुण दी जेहड़ी दिवाली है ना, हुण कोई त्योहार समझ के नहीं मनांदा। हुण समझदे है कि सेल लगेगी, सेलां लगणगियां, शॉपिंग करांगे। ठीक है, हुण दा जेहड़ा जमाना है ना फुकरापंथी दा जमाना हो गया, स्टेटस की गल हो गई। उस जमाने च ये गल्लां नहीं सी हुंदियां, लोकां च प्यार हुंदा सी, मुहब्बत हुंदी सी, एक दूजे नूं अंडरस्टैंडिंग हुंदी सी। ठीक है, मिलजुल के सारे मोहल्ले वाले पूरा करदे सी, आंढ गुआंढ बड़ा आपस समझदे सी अपना ही घर है। लेकिन हुण दा जेहड़ा समा है त्योहारां दे मायने भी बदल गए ते लोकां दीयां भावना भी बदल गईयां। एक शेर है, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने, पैसे ने खून सफेद किते भाई भाई नूं ना सियाने। ओदा अर्थ यही है, भाई भाई तो मतलब रिश्तेदारियां बदल गई, मायने बदल गए, त्योहारां दे मतलब भी बदल गए। ठीक है, समझ आई? हाँ जी मैम। ਤੇ ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਫੈਂਸੀ ਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਮ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ, मैं तुहानूं दस्सणी की हुंदा सी। उस वेले इहो जिहियां लाइटां नहीं सी हुंदियां। ठीक है, जिवें हुण असीं लाइटां लाने ना, उस वेले की हुंदा सी कि बल्ब हुंदे सी छोटे, वड्डा बल्ब छोटा बल्ब हुंदा सी, ਉਹ लगांदे सी। या लोग की करदे सी कि फोटो फ्रेम बना के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, मोमबत्तियां जगांदे सी, दीवे जगांदे सी। ठीक है, दीवे भी सरों दे तेल दे। अच्छा, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਕਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। मैं कहनी हाँ तू मन्ना नहीं पुत्र कि उस वेले देखो हुण असीं तां कल्चर ही बदल गया, असीं अंदर ही सौंदे आ, सारे असीं सौंदे आ ना, उपर छत ते कोई सौंदा ही नहीं। लोग दिसंबर मतलब सितंबर के महीने तक छत ते सौंदे सी, गर्मियां दे विच इन्नी गर्मी नहीं सी हुंदी। ठीक है, क्योंकि पोल्यूशन घट सी, पोल्यूशन घट सी। ठीक है, तो हुण तां मतलब सोना बाहर बहना ही औखा हो जाता जुलाई के महीने च। लेकिन उस वेले लोग छत्तां ते सौंदे सी अप टू सितंबर तक। नवरात्रा से जाके मंजियां लोग थल्ले लैंदे सी। मतलब ये सारा प्रदूषित वातावरण ने लोकां नूं दूषित कर दिता है, लोकां ने मन भी दूषित करते प्रदूषित वातावरण में। ठीक है, सही गल है मैम। हाँ जी मैम, अगला क्वेश्चन ये है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਅੱਜਕੱਲ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਭਾਵ ਜੋ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਗਏ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਹੈ। ठीक है, फुकरापंथी है, स्टेटस सिंबल है, शोबाजी है, शोशेबाजी है, कितना कोई कर रहा है।
ਜੇ ਇਹਨੇ ਘਰ 5 ਲੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਮੈਂ 10 ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਹਨੇ 100 ਦੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ 200 ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਲਾਵਾਂ। ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੀਪਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ, दीपा ਦੀਆਂ पंक्तियां, दीप जमा आवली, 2 शब्दों से बनता है दिवाली, ठीक है। लेकिन ये 5 दिन का त्योहार है, नोबडी नोज, जिसको किसी को नहीं पता। धनतेरस, चौदस, दीपावली, फिर आ जाता है गोवर्धन पूजा, भैया दूज। ये 5 दिनों का है। लोग आगे लोग जलाते थे दिए, ये जलाते थे 5 दिन। सही गल है मैम। ते अजकल दे लोग शोशेबाजी विच ज्यादा हो गए ने। बिल्कुल, मैं तो क्या ना, दूषित मन, प्रदूषित वातावरण, दूषित मन हो गया, ठीक है ना। प्यार खत्म हो गया, प्यार खत्म हो गया। कोई तुसी देखो, प्यार खत्म होना, रिश्ते खत्म हो गए। लाइफ जेड़े विच जेड़े रिश्ते है, जस्ट लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट, समझौते है। चाहे वो कोई भी रिश्ता है, जितना से समझौता निभता है निभाओ, नहीं तो नहीं। देखो फिर वृद्धाश्रम क्यों बन रहे हैं, वृद्धाश्रम क्यों बन रहे हैं, कारण यही है, फीलिंग्स खत्म हो रही हैं। लोग दीन, ईमान, धर्म, पैसा है। पैसे तो बिना कुछ भी नहीं। ये गल ठीक है कि पैसा जिंदगी की जरूरत है, पर पैसे नूं इन्ना भी हावी ना होण दिओ कि तुहाडे लई वो मुश्किल खड़ी कर दे। पैसा बीमारी, पैसा रिश्ते खत्म करता है, पैसा ही मरवाता है बंदे नूं, और मौत का कारण भी पैसा ही बनता है। ज्यादा पैसा है, औलाद बच्चे माँ बाप नूं मार के पैसा ले जाएंगे, लुट के लोग ले जाते, ठीक है ना। इसलिए मान्यता खत्म हो चुकी है, इंसान जड़ा बदल गया। मैम तुहानू की लगता है कि पहले दी दिवाली ज्यादा शुद्ध ते वधिया सी या अज दी दिवाली है? नहीं, पहली दिवाली बहुत अच्छी थी, पहली दिवाली बहुत अच्छी थी। लोग ना मिलजुल के मनाते सी, भावना नाल मनाते सी। देखो गुरुद्वारे मंदिर जाते सी, रस्ते दीपक जगाते सी, गरीबां दी मदद करते सी, ठीक है। अज कौन करके राजी, कौन करके राजी है? अज असी होर भी अच्छी बना सकते हैं। चाइनीज चीजा बंद करके गोबर के दीपक जगाओ, गोबर के बने हुए दीपक जलाओ, जेड़े की प्रदूषित भी घट है, ठीक है, और गंदगी भी नहीं फैलती। गोबर भी यूटिलाइज हो जाता है, खाद वास्ते तो कर दी हैं, पर वो दीपक बन के बहुत अच्छे बनते, क्योंकि वो दीपक जो ना पूरा जल जाता है, फिर पूरा जल जाता है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ है कि थल्ले भी गंदगी नहीं पैंदी। पहली दिवाली ਜਿਹੜੀ ਸੀ प्यार मुहब्बत की दिवाली सी, और शहरों ਦੇ ਵਿੱਚ 8 दिन पहलों ही रौनਕਾਂ लग ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। लोग ਜਿਹੜੇ ਸੀ बाजार लगते सी, घूमते सी, रोटी खाण तो बाद शाम ਨੂੰ रात ਨੂੰ निकलते सी। और ਹੁਣ ਦਾ माहौल ही ਇਹੋ ਜਿਹਾ हो गया, ਤੁਸੀਂ बाहर सेफ ही नहीं है, इवन घर ਦੇ बाहर भी सेफ नहीं हो। इसलिए पहली दिवाली बेस्ट दिवाली थी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰੌਣਕ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? नहीं आ सकता बेटा। हर चीज समय नाल हुंदी है। समा जिहड़ा है ना बलवान हुंदा है। असीं पढ़िया सी कि भगवान राम दे आन नाल 14 साल तो उन्होंने दीपक जगाए, घ्यो दे दीपक जगाए। इसे तरह 6वें गुरु दे हरमंदर साहब अमृतसर शहर च आन नाल लोकां ने दीपक जगाए, है ना। असीं ये कहंदे हैं ना, ਉਹ दीपक जलाना, अज दा दीपक जलाना, उस दीपक जलाने दे विच भावना सी, भावना सी, मान्यता सी, ठीक है ना। लेकिन अज दी जिहड़ी भावना है, वो की भावना है? सिर्फ लाइटां जगा के असीं करदे आ बस, ना खान पीन नूं। अगे घर लोग बनांदे हुंदे सी, हुण किहड़ी चीज लोग घर बनाउंदे? सब बाजारों ही खांदे, बाजारों ही खांदे हैं। पहले नहीं सी जांदे, लोग घर बनांदे सी, सारा कुछ प्यार नाल बनांदे सी। जे अज मेरे घर खीर पक्की है ना, तो गुआंढियां नूं भी दित्ती जाएगी, दित्ती जांदी सी। हुण
ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਬਦਲ ਗਏ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਲਹਿਰ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 1% ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਢੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਦਲ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਬਦਲਣਾ, ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ 3 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ, 4 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਚੁਲਬੁਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਤੇ ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਮ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ। ਓਨਾ ਗੰਦ ਪਏਗਾ, ਓਨੀ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲੇਗੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਵੇਗੀ, एयर पोल्यूशन होएगा, साथ ये बीमारियां होंगी, ठीक है। ये गंदगी रुड़ के जाएगी, नदियों से जाएगी, पानी दूषित होएगा, पानी दूषित होएगा, पेट दी बीमारियां आएंगी। समझ आई? यस मैम। इन्हां नूं अगर तुसी रोकना चाहते हो, अगर इन्हां रोकना चाहते हो, आतिशबाजी बैन की जाए। ज्यादा तो ज्यादा बच्चों फुल झड़ी ठीक है वो चला, लेकिन ओदा भी नुकसान ही होंदा और इहदे नाल भी वातावरण दूषित होंदा। दूसरा इहदे ते बैन क्यों करना चाहिए, क्योंकि जिन्नियां फैक्टरीज है इन्हां दियां फायर वर्क्स दियां, उहदे ते बच्चे काम करदे, तुसी पैसे ते साड़ नहीं सकदे, ठीक है ना, नोट नहीं जला सकदे। आतिशबाजी नाल की करदे, नोट जला रहे हैं। जे ओरी जगह असी वातावरण नूं शुद्ध बनाना है, तेल दे दीवे जलाओ, मोमबत्तियां जलाओ, ताकि ह्यूमैनिटी दी सेवा होवे। जिन्ने ब्लाइंड इंस्टीट्यूट है सब कैंडल बनाउंदे, ठीक है। हाँ जी मैम। उन्हां नूं भी पैसे मिलणगे, उन्हां नूं भी रोटी मिलेगी। इस तरह सानू सोच अपनी बदलनी पवे, ठीक है। देखो हुण तुसीं देखो दिवाली तो वाले दिन तो बाद देखियो किन्ने बच्चों दी अखां जांदियां, किन्ने बच्चों दी हथ पैर सड़ जांदे आ। और एक बारी जे अख दा अंदरला हिस्सा सड़ जाए, बंदा जिंदगी भर वास्ते अन्ना हो जांदा। इसलिए माड़ी जी लापरवाही जिंदगी बर्बाद कर। ਤੇ ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਰਾਜੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਵੀਪਰ ਹੈ
जिन्ने स्वीपर है सरकार उन्होंने पैसा नहीं दिंदी, सैलरीज मिलदी है, सैलरीज मिलदी है। ये मस्तियां मार दे दिवाली दी मस्तियां कि लोकां कोलों पैसे इकट्ठे करांगे महल्ले चों तां असीं कचरा चकांगे, समझ गए। ये लोकां दे मूंह नूं लग्या लहू, ये लहू है। तनखाह तो इलावा जेडे है पैसे करदे हफ्ता इकट्ठा नहीं करदे जेडे, इस तरह ही इन्हां नूं लगा है दिवाली का त्योहार का हफ्ता लईए, समझ आई। The next day. So, good evening. This interview is for the Earthen Awards program, and in this interview, we were required to take interviews from two people of different generations, and we were required to get a contrast between then versus now, and we were required to take a festival, an event, or any celebration, and we decided that since it's the month of November, let's just take Diwali. And so today we'll ask you certain questions, and let's just begin with the interview now. What do you think is the difference in the way Diwali was celebrated in the past, and if you have to compare it to the present times? Actually, I see that there is a lot of difference in the way the people were celebrating Diwali or be it any of the festival. Say 50 to 60 years back, that is in our ancestral generation. And considering that there is a change, because now the people have, I think, that just for that thing and all, show off and all, they have cut themselves with the emotional aspect of the festival. Ultimately, the climate and actually the nature and environment has to pay its cost. So in a nutshell, yes, definitely there is a change in the way the people were celebrating festivals earlier and compared it to the current situation. So what would you say, which form of celebration was better? I would definitely say that the way our ancestors, the way our elder people in the family, in our society used to celebrate festivals, that was quite fine. Because there are actually two important reasons for us to justify my statement. That first of all, they were much more attached with the aesthetic and the emotional aspect and the value of the festival. In addition to this, by not actually, buying all such fancy items and all, that's what we call show off. They are not only, just connecting themselves and their future generations to follow with the aesthetic appeal of the festival, but definitely they are even helping, to conserve and to protect the environment. Because actually, see, after festivals such as Diwali, the environment and the nature has to pay a very tremendous cost in case of your pollution, your garbage dumping, etc., etc. And the list follows on, you see. What do you think? Are these formalities like the fancy gift wraps, decorative items, etc. are good for the future part? Aren't they producing such a tremendous amount of waste? And can the youth help to switch them to an eco-friendly alternative? Yeah, definitely we can, because I am a staunch advocate of, you see the conservation, preservation of environment. Because first of all, by buying, even when you go to the market to buy sweets and all, because it is definitely the time of festival, so people are there going to the sweet shops and all buying those sweet boxes. But you see, after when that box is empty, you just dump it out, and what do you expect? You are the only one eating the sweets in such festivity or in such festival season. Actually, it's not. You see, millions and billions of such boxes are being dumped. In addition to this, when you buy the lights and all, if the lights diffuse off, if the lights are there for only a one-time use, they're using for sort of type, you have to dump them away. And in case you see the situation that are existing in our country, we actually do not have such places, such accurate places, rather, I should say, where actually, this waste and all could be dumped. I'd rather say that the people should definitely switch on to such eco-friendly and biodegradable materials rather, because biodegradable materials will not only help you in satisfying the needs of the festival, such as decorate your house, decorate your room, etc., and that stuff, but will definitely be helpful for the nature as well, because it will add much it will not add much, but rather it will decrease the cost that nature has to pay. Definitely the pessimistic way after such festivals are celebrated. Can we say that during today's times, the true meaning of celebration has faded and people only believe in the materialistic thing nowadays? Yeah, actually, people are not actually, you can say, attached with the aesthetic appeal of the festival. The people are not knowing in, what lieu we are celebrating the festival or why we are celebrating the festival. They just know that, yeah, Diwali is coming, Dussehra is coming. They need to burn. Burning crackers is actually the prime thing that every little fellow, every little kid knows when Diwali approaches, or even when Dussehra approaches. What do they think? They just want to go, rather want to go to view
the effigy of the Ravan being burnt and all. So the people aren't attached much with the aesthetic appeal of the festival. Now, status symbol has become a more important thing, a more important topic to be discussed in the current scenario, where the people just was to show up that they are also existing in the society, just was to portray their presence in the society and the environment. They are rather, switching on to such, things like fancy items. They bring in lights, they bring in all sorts of those things, which are not only, just helping them to enjoy the festival, but you see at the larger aspect, you consider the larger point of view, it harms nature indirectly, directly. So definitely, I should say now the festivals are just for the sake of celebration, and there is no such aesthetic appeal. There is no such emotional aspect of the festivals prevailing in our country right now. Exactly. Is there anyone in the community that who celebrates the festivals or events in a more eco-friendly manner, or is there nobody? To be very honest, I have my father celebrating the festivals in a very eco-friendly way. Since I was a kid, since I was, rather you should say 5 to 6 years old, I should rather say not only me, but probably 60 to 70%, not in the current scenario, but I'm referring to the time we say 10 to 15 years back. Every little child, especially when he or she is brought up in the Indian household, in the typical Indian family, moral values are quite important in addition to the academics, in addition to the studies that a particular child pursues. Definitely moral values are instilled in him or her, so definitely that inclination, that bending towards the environment is there among the people. And not only I considering my father, but definitely there are some other people living in my locality, living in my society, they're definitely opting for eco-friendly ways. Like I have one of my neighbors who, especially when Diwali or Dussehra approaches, they rather light up the diyas on the boundaries of their houses, on the roofs of their houses. And I've never seen, though, they're having 2 children, and I think the average age group of both of them is somewhat between 10 to 12. And you see between that age lineup, the children are carried away with all sorts of this materialistic things. So considering that aspect, actually you see that there are people adapting to such eco-friendly methods and all. And that should be the case with every Indian household, I should say, I believe, because that's what our country, that's what our tradition stands for. I guess we are over with the questions. Thank you so much, Parjanya, for your time. Thank you so much.